Karma sir. Yes, if we are ready, we can start, sir. Sachin Karma sir, join हो गए? हाँ सर, join हो गए. Good morning, Sachin sir. Welcome once again. सर स्टार्ट करें. रेमान सर, जोशी सर. जजेस से बात कर लीजिए. जजेस क्रांति सर. From judges. If the judges are agree, then please start. Pawan sir, अगर if we are ready, then we can start. Everything is ready, then we can. क्रांति सर स्टार्ट करें. Yes sir. आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिए और जजेस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया. यूट्यूब पे लाइव भी हो गया. YouTube पे लाइव. Okay. Sachin sir, Kranti sir, please give permission. Yes. Shall we start? Okay, thank you. Kranti sir, ready? Ready, sir. Ready. Namaskar sir. Namaskar sir. Okay, Khushi, start the program. Yes. Passion, camera, lights, action. Wake up, get up, and don't forget to stay up. Sway off, but remember not to. This is what we are going to call fashion. A very warm and pleasant good evening to one and all present here. Today we are at the last day of virtual fun and absolute enjoyment in Spandan-2022. I, Khushi Srivastav, with my co-host Saurabh Sharma, welcome you all with immense pleasure and celebration on behalf of Shri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya Indore in the Ambriti, the Fashion Show 2022. Fashion refers to anything that becomes a rage among the masses. Fashion is a popular aesthetic expression. Most noteworthy, it is something that is in vogue. Fashion appears in clothing, footwear, accessories, makeup, hairstyles, lifestyles, and body proportions. Furthermore, fashion is an industry-supported expression. Fashion is something that has permeated every aspect of human culture. So here we are with our fashion divas to showcase their glamorous outfits and set the stage on fire. Now, I would like to call Professor Pawan Kumar Gupta, Coordinator Ambriti 2022, to address the gathering. Over to you, Pawan sir. Good morning, everyone. I, Pawan Kumar Gupta, welcome respective judges, all the dignitaries, participants, guests, sponsors, students, and faculty members for this virtual fashion show, that is Ambriti 2022. Ambriti, the fashion show, is one of the most exciting event in Spandan 22 for fashion lovers and designers. Spandan, a national tech management fest providing platform to the college students to showcase their talent. This is the 7th edition of Spandan. It started from 17th February 2022. Today is the final day of Spandan 2022, which is going to start with Ambriti, the fashion show. Organizing event like fashion show online was out of imagination for me, but overwhelming response from the participants signifies that today's generation is so creative and able to utilize the technology. I am happy to say that students not only from SBBB, but also from various colleges from Indore, Madhya Pradesh, and across India participated for this virtual fashion show. For this virtual event, My FM is a radio partner, while Pidilite, Reflection Saloon, and Campus South are the sponsors. I am thankful for all these sponsors. I am also thankful to our respective judges, Sri Sachin Karma sir, Sri Kanti Soni sir, and Mrs. Yogta Agarwal for accepting our invitation for this event. Respective judges, total 47 students were selected for Ambriti 2022. Students were invited for participation in fashion show for solo performance only for any one of theme, that is traditional or retro or western style.
There are two titles, that is Miss Ambriti and Mr. Ambriti. I request all the respective judges mark accordingly. I am sure everyone present here will enjoy this event. Now I hand over this session to the Saurabh and Khushi. Thank you. Now, I would like to call Saurabh for a brief introduction of Mr. Kranti Soni, sir. Thank you, Kushi. So, as a fashion choreographer and a show director, Shri Kranti Soni is one of the most sounded personality of Central India's fashion industry. Having experience of more than 20 years in the field of fashion world, he is the one who introduced new trends in modeling. More than 22 national level shows, 3 international shows, and more than 300 state level shows. He is keen in his work, and his dedication towards fashion industry inspires many becoming models and choreographers. It's an immense honor to have you with us, sir, today. We welcome you on behalf of Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore. Thank you, sir. Now, I would like to call Khushi for a brief introduction of Mrs. Yogita Agrawal, ma'am. Mrs. Yogita Agrawal is presently working as an assistant professor in SVIT SVV Indore. She has completed her graduation in BTech from DAVV, Indore. She has completed her MTech from Maharaja Siaraj University in January 2001. She has more than 20 years of teaching experiences. She has published more than 35 articles in various journals and has participated in more than 25 conferences and training programs. We are extremely delighted to have you with us, ma'am. And we welcome you on behalf of Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore. Now, I would like to call Saurabh for a brief introduction of Sachin Karma, sir. Shri Sachin Karma is presently the owner of Shubh Sanskriti Event Wedding Planner, Indore. He has been awarded with many prestigious awards. Some of them are Zee Cine Star Ki Khoj, Malwa Kala Academy Award, Ahilya Samman Award, MP State Level Dance, and many more. He has also organized Yo-Yo Honey Singh Live Concert Pune and many more. It is our immense pleasure to have you with us, sir, today, and we welcome you on behalf of Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore. Now, without wasting much time, we will be starting with our performances. So, now, with the kind permission of respected judges, we would be starting our program. Yes, we start. Okay. So, fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street. Fashion has to do with ideas, the way we live, and what is happening around us. So, let's call our first and foremost contestant who has an adorable smile on her face. With this, presenting Himani Ishpunyani from Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore. I request technical team to play the video of Himani. Thank you for such a lovely performance, Himani. चलो एक दूसरे की ख्वाबों में डूबकर हम एक अपना ताजमहल बनाते हैं जिसमें मुमताज तुम बनो और शाहजहां हम बन जाते हैं. So here we have our next contestant who reminds us of the evergreen Mumtaz, presenting Pooja Satija from Sri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore.
Real models don't go with the trend, they set the trend. And with that, so we here have Kritika Anand from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya showcasing the retro era in a waggish way. ये जवानी तररुरु है दीवानी तररुरु ररररा ररररा zu 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 हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान मैं Thank you, Kritika. Expressing the boldness of beauty through fashion. So here we have our next contestant, Khushi Sharma from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, who is here to set the stage on fire. You said I just got a pop, get into it, yo. Pop out with a truck, get into it, yo. If you go to church, I said get into it, yo. I guess she ain't got a butt, now forget get into it, yo. And I said I just got a pop, get into it, yo. Pop out with a truck, get into it, yo. If you go to church, get into it, yo. If she ain't got a butt, forget get into it, yo. Yeah, you just wanna party, you just. Thank you, Khushi. Dress up your mind and you will be able to make all sorts of fashion statements. And with this, here we have our next contestant, Kritika Jain from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. एक ठुमके पे सौ ताड़ियां हिले जब लक तेरा हिलती है बाड़ियां एक ठुमके पे सौ ताड़ियां हिले जब लक मेरा हिलती है बालियां एक ठुमके पे सौ ताड़ियां हिले जब रंगीनियों में खो जा पी के पिला के नाच मत भरे नैनों से तू नैना मिला के नाच तेरी अदा I like the way you move तेरा बदन I like to see you move तेरी नजर it says I wanna dance with you तेरी अदा I like the way you move तेरा बदन I like to see मैंने आज हिम्मत कर ली यार। Thank you, Ritika. Depicted eyes sparkle from the inside out. With a sparkle in her eyes, presenting our next contestant, Madhvi Puchare from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore. आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पल को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो Thank you, Madhvi. Everything looks good with confidence and style. With this, presenting our next contestant, Abhishek Malviya from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, who is here to make on groove on the famous track Jugnu. बोलो ना क्या किया जाए अब आंखों से नींद है गायब खुश हूं मैं इतना क्यों हूं तुझको तो बच्चों में क्यों जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू Thank you, Abhishek. कहता है दिल रास्ता है मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ है मंजिल. प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार करने से फिर क्यों डरता है दिल. Presenting our next contestant, Aishwarya Thakur
from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore, who takes us to the retro tour. Drop. Thank you, Aishwarya. Fashion is just another accessory for someone with great style. With this, presenting our next contestant, Rahul Sharma from Kala Salingam Academy of Research and Education. Thank you, Rahul. Indian fashion is a complex language of glamour, modesty, and decency. Presenting our next contestant, Anjali Sharma from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore, flaunting her Indianness. Thank you, Anjali. Ambriti 2022 is sponsored by Campus South with Delight, Reflection Saloon, and our radio partner is 94.3 My FM Jio Dil Se. Kranti sir, may I request you to please something say about this performance of the students we have till seen? अभी काफी अच्छा चल रहा है, कुछ वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉक बच्चों ने काफी कम किया है, प्रेजेंटेशन थोड़ा ज्यादा है बच्चों का और काफी अच्छा कर रहे हैं बच्चे. Thank you, sir. Thank you, sir. So moving ahead, simplicity is the keynote of true elegance. With this, presenting our next contestant, Aditi Vyas from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Gorgeous with attitude in every latitude. Thank you, Aditi. I like things to be modern and still have a bit of tradition. Justifying the above statement, next we have Vaishnavi Joshi from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore. In a world full of trends, she chose to remain classic. With this, presenting our next contestant, Bhumika Parihar from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. Thank you, Bhumika. Perfect matching accessory for a sari is not the jewelry but the smile which you carry. Presenting our next contestant, Reena Patidar from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore, who is carrying an Indian sari with a modern touch.
Thank you, Reena. Fashion fades, only style remains the same. With this, presenting our next contestant, Rini Prasad from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, who carries fashion with a touch of cool styling. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Thank you, Rini. Now presenting our next contestant, Mazi Marathi Mulgi Rupanvita Nimorkar from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore, who has graced every look worn. बिखरा सा चुप ही चुप है राजा बोले कैसे लेना जा बोले कैसे लेना जा बोले कैसे लेना जा बोले कैसे लेना जा चुप ही झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो अच्छा लगता है एक राजपूत अंत तक राजपूत रहता है, सम्मान से भी और जबान से भी. With this, presenting our next contestant, Kuldeep Singh Pawar from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, who does justice to the statement. ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਊਟ ਆ ਉਹ ਗੰਨ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਨਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਆ ਦਿਲ 'ਚ ਬਰੂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਪੂਤਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਪੂਤਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਪੂਤਾ ਨਿਰਾਹੀ ਬੰਦੂਕਾ ਐਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਿਊਟਾ ਯਾਰੀਆਂ 'ਚ ਟੌਪ. Thank you, Kuldeep. Love of beauty is the taste, but the creation of beauty is the art. Presenting our next contestant, Priya Panchal from Vikram University, Ujjain, a Marathi Mulgi. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Thank you, Priya. तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा. With this song, presenting our next contestant, Kushagra Chauhan from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, flaunting our Rajasthani culture. तुझ संग बैर लगाया
रहना मैं फिर अपने जैसा, हो रहना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये है इश्क, ये मैल इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये है इश्क, ये मैल इश्क। Thank you, Kushagra. Believe in your own style and stick to it, no matter what. Presenting our next contestant, Anjali Dubey from DAVV. Somewhere out there, I know there is someone who's waiting just for me. Nahiya, he's gonna set me free. Nahiya, जिसकी आंखों में मेरी नमी हो, कोई तो है वो यार। नाहिया, करूं मैं इंतजार। नाहिया, जिसके जीने में मेरी कमी हो, रहे जो बेकरार। नाहिया, वो मुझ पे निसार। नाहिया, जिसकी हर बात मुझसे जुड़ी हो, चाहे जो बेशुमार। नाहिया, वफा से वफादार। नाहिया, Thank you, Anjali. Ambriti 2022 is sponsored by Campus South, Pidilite, Reflection Salon, and our radio partner is 94.3 My FM, Geo Dilse. Yogita ma'am, can I request you to put some comments to our students, all the participants? Any suggestions? All the participants are doing very well. Still it is virtual mode, but participants does not feel that they are doing on the virtual mode. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Moving ahead, Bengal is not only known for its sweets, but also for its sweetest culture inherited. With this, presenting our next contestant, Falguni Jhurani from Shri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya, representing our Bengali culture. Thank you, Falguni. Western fashion is the armor to survive the reality of everyday life. Presenting our next contestant, Pankaj Vishwakarma from Shri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya, exhibiting the Western culture.
थैंक यू पंकज। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। With this, presenting our next contestant, Mandvi Savita from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, who reminds us of our inspirational Rani Lakshmibai. थैंक यू मानवी। मिश्री से मीठा पानी है, पगड़ी हमारी अभिमानी है। Presenting our next contestant, Rashi Singh Sisodia from Vikram University, Ujjain, flaunting the Rajasthani culture. Thank you, Rashi. Fashion is fickle. Style, on the other hand, endures time. Presenting our next contestant, Tushar Barapatre from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. Thank you, Tushar. Tradition is the illusion of performance. Presenting our next contestant, Pranay Sakhare from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore, showcasing lungi with a modern touch. Thank you, Pranay. Fashion goes better when it's retro. With this, presenting our next contestant, Hindavi Yes, sir. Chavan. Sir, just a moment. Yes, sir. I want to just say all the judges, Kranti sir, Sachin sir, Yogita ma'am, यस सर। everything is fine, sir. गुड जॉब यस कैसा सर। लग ठीक लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है सर, बहुत कंफर्टेबल बढ़िया है कर रहे हैं सर? बच्चे। हाँ हाँ, तो सर आपका जजमेंट शीट में आप कंफर्टेबल हैं? जी सर। बिल्कुल सर, श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसको करने के लिए, क्योंकि अब क्या थोड़ा पेंडेमिक सिचुएशंस हैं और सब चीजें हैं, फिर भी थोड़ा सा उनका ये है। हालांकि उस लेवल तक नहीं, बट लेकिन ये है कि उनके उत्साह को और उनके जज्बे को अप्रिशिएट हमारे तरफ एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं बच्चे, जो मतलब पिछले साल से भी मतलब काफी अच्छे बच्चों में उत्साह है मतलब करने का, और काफी अच्छा टैलेंट बच्चे बता रहे हैं। और आपने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली सर, कि वो टीम भी बहुत अच्छा अपने को जो पार्टिसिपेशन था वो इस बार उससे ज्यादा हमको पार्टिसिपेशन मिला, ज्यादा है। जी जी। नहीं ये और बहुत अगर अच्छी मान बात के है ये चलिए,
और मान के चलिए अगर कभी ये फिजिकल मोड पे होता, ऑफलाइन होता, तो बच्चे तो उसमें बढ़ चढ़ के बिल्कुल, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने जो अपनी एनर्जी अपने अंदर छुपा के रखी है, वो चाहते हैं कि उसको निकाल के लगे। जी जी। और आप लोगों का सहयोग। जी जी। सचिन सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ना सर, बहुत बढ़िया चल रहा है और टीम वर्क बहुत अच्छा है आप लोगों का, बिकॉज इस बार पीरियड प्रॉपर है और जो जितने बच्चे क्या है, सुपर वर्क। जी 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 जी। आप लोगों का सर साथ है और एसोसिएशन और आपका आशीर्वाद बच्चों को मिल जाता है, आप दोनों को का हमको बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाता है। जी जी सर, तो आगे बढ़े सर फिर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल श्योर। थैंक यू प्लीज सौरभ। Yes, sir. Moving ahead, presenting our next contestant, Hindavi Chavan from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, taking us back to the retro era. तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है। Thank you, Hindavi. Presenting our next contestant, Harshita Daya from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, who will be broadcasting our Rajasthani culture. लोग आज भी हमें बाइसा बुलाते हैं, बाइसा इसलिए नहीं कि हम पोशाक और गहने पहन के घूमर घालना जानते हैं, बल्कि इसलिए कि हम अपने परिवार और समाज का मान सम्मान ओढ़ कर चलते हैं। Maybe all we need to do is stop the digital and bring the retro era back. Presenting our next contestant, Nishad Sheikh from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। Thank you, Nishad. हमारे हिंदुस्तान की भारतीय परंपरा। Presenting our next contestant, Shruti Dave from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, flaunting the Indian tradition of sari. जब आएगा सवेरा, आसमान में सुरख तू बना दे, उस पर ही तो है ना दिन का बसेरा। Thank you, Shruti. Ambriti 2022 is sponsored by Campus South, Pidilite, Reflection Saloon, and our radio partner is 94.3 My FM, Geo Dil Se. So, moving ahead, who needs swag when you have a kurta pajama? And with this, presenting our next contestant, Akshay Bende from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya.
Thank you, Akshay. Presenting our next contestant, Ayushi Sirasao from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, flaunting the Navri Marathi sari. आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, आई भवानी तुझ्या कृपेने तारसी भक्ताला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, अगाध महिमा तुझी माऊली वारी संकटाला, आई कृपा करी माझ्यावरी जागवितो. Thank you, Ayushi. Keeping our Indian traditions alive, one lehenga at a time. Presenting our next contestant, Shivani Chauhan from Vikram University, Ujjain, flaunting her beautiful lehenga. कॉफी ला दे. Thank you, Shivani. There is nothing like a well-tailored man in a well-tailored suit. Presenting our next contestant, Lakshay Jagri from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Thank you, Lakshay. Elegant, glamorous, and decent. With this, presenting our next contestant, Mansi Upadhyay from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, doing justice to the statement. Thank you, Mansi. जैसे चमके जुगनू बिन रोशनी के वैसे चमके झूमर, जैसे नाचे गाए मोर आंगन में वैसे रानी घूमे घूमर. Presenting our next contestant, Kashish Panjwani from RKDF University Bhopal, presenting Rajasthani culture. राजपल
Saurabh, you are muted. Thank you, Kashish. Wearing a century's worth of tradition, with this, presenting our next contestant, Trisha Maheshwari from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. Thank you, Krisha. Presenting a brown Munde, Prashant Samvale from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, flaunting his fashion styling. Thank you, Prashant. अगर हर किसी का लहू बहाना हुनर होता तो इतिहास का हर इंसान शहंशाह होता. With this, presenting our शहंशाह Ayush Lakhera from Ujjain Engineering College. Thank you, Ayush. In a world full of trends, I want to remain a classic gentleman. Presenting our next contestant, Prashant Malviya from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Gorgeous with attitude, in every attitude. Now I request to Sachin sir to motivate our students. Sachin sir. Sachin sir. Sachin sir, say some few words. Yeah, sure. गुड जॉब, गुड वर्क. एंड पूरी टीम को मैं आप पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि इतना अच्छा इवेंट पिछली बार से रिलेटेड इस समय जो का इवेंट चल रहा है वो सुपर हो रहा है. और स्टूडेंट भी का वीडियोस भी बहुत अच्छे दिए हैं उन लोगों ने, वॉक भी बहुत अच्छी है. बट स्टूडेंट से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वो प्रॉप्स को ज्यादा यूज नहीं करें. अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आप सिर्फ वॉक पे और पोज पे ध्यान दें. एंड सो गुड
Good work, sir. Good work. No doubt. Congratulations, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Ambriti 2022 is sponsored by Campus South, Pidilite, Reflection Salon, and our radio partner is 94.3 My FM, Geo Dilse. I request the technical team to please play the video of Campus South promotional video. Thank you, sir. If India is the canvas, Lehenga is the art. With this, presenting our next contestant, Rashmi Kushwaha from Renaissance University, Indore. Thank you, Rashmi. Black is not a color, it's a lifestyle. Presenting our next contestant, Aryan Mehta from Ujjain Engineering College, flaunting his cool black outfit. Baby, my Valentine. Can I hit the make you want them to do? If you leave me a good time, I swear you are like the oxygen I need to survive. I'll be out. Thank you, Aryan. Dress how you want to be addressed. With this, presenting our next contestant, Shresht Vardhan Kodaria from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. Thank you, Shresht. I put on some smooth sass and change into a smooth silk lungi. Presenting our next contestant, Gokul Vignesh from Sona College of Technology, Tamil Nadu. Thank you, Gokul. Fashion changes, but fashion endures. With this, presenting our next participant, Archana from Sona College of Technology, Tamil Nadu. Fashion doesn't get old, it gets vintage.
Presenting our next contestant, Nidhi Porwal from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya. ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना Thank you, Nidhi. Dressing up as a proud Indian never goes out of fashion. With this, presenting our last but the least fashionable contestant, Sandeep Carpenter from Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, flaunting the Indian culture. Thank you, Sandeep. Ambriti 2022 is sponsored by Campus South with Delight, Reflection Saloon, and radio partner is 94.3 My FM, Geo Dil Se. Hello. Yes, sir. Sir, I request to all the judges Yes, to sir. calculate start the process of valuation. I request all the respected judges. Meanwhile, we are showing. I request the technical team to show the. Yes. Okay, so Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya Indore is organizing National Fashion Show event on April 2, 2022, that is Vinirma 2K22 on virtual platform. I request the technical team to please play the promotional video of Vinirma 2K22.
Thank you, sir. Thank you. Ambriti 2022 is sponsored by Campus South, Pidilite, Reflection Salon, and our radio partner is 94.3 My FM, Geo Dilse. Very nice. This is the video of Campus South. Campus South. It's better to cherish some moments that we have here in the Spandan 2022. So I request technical team to please play the video for Spandan. technical team. Okay, Shadab sir. Thank you, Shadab sir. मीनवाइल जब तक कि हमारा जजमेंट आ रहा है, समृद्धि का रिजल्ट आ रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे जजेस से कि स्टूडेंट्स आपसे थोड़ा मुखातिब होना चाहते हैं, तो सर अगर आपकी परमिशन हो। बिल्कुल सर, श्योर। तो अच्छा रहेगा उससे, और उनको भी क्या होगा कि उनका किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या आगे उसमें जरूरत है, क्या हमको चीजें ऐड करना चाहिए, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूंगा इसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इसमें हमसे अभी जुड़े हुए हैं, अगर वो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं या हमारे जजेस से मुखातिब होना चाहते हैं, उनसे कुछ बात समझना चाहते हैं ताकि उनके उसमें और निखार आ सके, तो प्लीज वो चैट बॉक्स में अपना नाम और क्वेश्चन भेजें और या हैंड रेज करें, तो हमारी टेक्निकल टीम उन्हें जो है वो पैनलिस्ट में ऐड कर देगी। सर तो सर हम क्या अटेंडेंस से सजेशन ले सकते हैं उनके हिसाब से कौन है विनर्स, जब तक जजेस रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं? वो भी कर सकते हैं उसमें, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज हो या कुछ बात करना चाहें जजेस से, तो दिस इज आई थिंक इज ओपन सेशन कि कुछ कहना चाहें वो हमारे जजेस से। They can also ask questions related अगर वो उनके अगर कुछ क्वेरी हो या वो कुछ समझना चाहें, या इस फैशन इंडस्ट्रीज में या मॉडलिंग में या एक्टिंग की दुनिया में कैसे अपना मुकाम हासिल करना है, तो इसके लिए अगर उन्हें कुछ टिप्स या कुछ गुरु वचन की जरूरत है, तो मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों लेजेंड्स हैं, क्रांति सर और सचिन सर, जिन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। तो इन दोनों को मेरा सलाम है, और दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और अपने अपने नाम को सार्थक भी किया है।
क्रांति सर का जो नाम है, क्रांति जो नाम है, तो उन्होंने थैंक यू सो मच। लोग जनरली समझते हैं क्रांति मतलब एक आंदोलन या कुछ वो है, वो तो है, लेकिन सूर्य की जो क्रांति है, जो एक तेज है, वो शब्द उससे मिला हुआ है और सर ने अपने मुकाम को उसी तरीके से तेजमान किया हुआ है, तो बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल सर, और हमारे थैंक यू सो सचिन मच, सर हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सचिन सर की जो मुस्कान है वही दिल को चीर देती है और वो दिलों पे राज करती है, और उन्होंने अपने कर्म से ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज वो कई एक जनरेशंस के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो आप दोनों को सलाम है बहुत बहुत। तो सचिन सर, बस बस आपका चेहरा देखते से ही हमारे दिल में मतलब कैसी तसल्ली आ जाती है। ये इसको कहते हैं मतलब एक पॉजिटिव जो कहते हैं ना पर्सनालिटी जिसको कहते हैं, वो है आपकी उसमें सर। सर हंसते रहो, कि आपको बस सबसे बड़ी बात यही है सर, आपको देखा तो ऐसा लगा वाली बात आ जाती है सर। बहुत बहुत अच्छा सर आप, और आप लोगों का जो एक सहज हमारे साथ जो जुड़ाव है ना, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, रिश्ता होना और एक आपस में बॉन्डिंग होना, वो एक बहुत अहम चीज है। और आप लोगों का ये मुकाम में पहुंचे, फिर भी जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ती है, आप लोगों का सहयोग और साथ हमको बहुत सहज रूप से मिल जाता है, तो ये आप लोगों की सज्जनता का प्रतीक है सर। जी जी सर, बहुत 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 बढ़िया सर। तो सचिन सर, बच्चे शायद हो सकता है कुछ थोड़ा शर्मा रहे हो, झिझक रहे हो, तो मैं आपसे ही शुरू करता हूँ सचिन सर, कि आप अगर कुछ कहना चाहें या आपके जीवन की कुछ ऐसी बात जो आपसे आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें, जो उनके लिए एक प्रेरणादायी एक प्रसंग हो सके। तो ये कहना चाहूंगा कि कठिनाइयां जो होती है सर, वो आगे बढ़ाने के लिए होती है। जब आप बहुत बढ़िया चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे, तो आप डर के आप वापस घर बैठ जाते हैं। बट वो चीजें उससे नहीं डरे और अपनी कठिनाइयों को सीधे राह पे चलते चले जाएंगे, तो आपको जो चीज आप पाना चाहते हैं वो ऑलवेज आपको मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होगी। ये नहीं कि आपको 2-4 बार में मुकाम हासिल हो जाए, बट आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा लगन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लगन। लगन आप बहुत बढ़िया साथ में, चाहे वो एक्टिंग फील्ड हो, चाहे वो मॉडलिंग फील्ड हो, या चाहे वो आप डांस फील्ड से रिलेटेड हो, या कोई भी हो, या शायद एजुकेशन फील्ड हो, बट आपको उस चीज में लगन लगानी है, पर्टिकुलर करते चले जाना है, ताकि आप उस चीज को पा सको। ये नहीं कि घर बैठ गए आप। तो मैं सभी से ही कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर, और कनेक्टिंग रहे और कंटिन्यू रहे अपनी अपने फील्ड में। थैंक यू सो मच। बहुत सही बात बताई सर आपने। और जो अगर आपकी बात को अगर हम उसको समराइज करें, तो उसमें पहला तो यही है कि चुनौतियां अपने साथ अवसर को लेके आती है, साथ में प्रॉब्लम आई है तो सॉल्यूशन भी उसके साथ होता है। और दूसरी बात है कि अगर हम जो भी काम करें उसमें अपना 100% दें, ये बात बहुत सही है, तभी आदमी उस मुकाम को होता है, पा सकता है। क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या होता है कि हम 100% नहीं दे पाते हैं, और ये बात बिल्कुल तय है कि जिसमें हमने 100% दिया है, तो उसमें कुदरत, प्रकृति, भगवान जो है वो जरूर उसमें साथ देता है, चाहे उसमें आप भाग्य बोलो। जी बट आप करो बस, एफर्ट तो करना पड़ेगी ना सर कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात की सर आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। क्रांति सर। जी सर। सर, बच्चों के लिए कुछ आशीर्वचन। बिल्कुल सर, मैं बच्चों के लिए एक चीज कहना चाहूंगा। जो हमारा फैशन शो हुआ, एक्चुअली जो बच्चों ने परफॉर्म किया वो अपने अकॉर्डिंग किया, पर बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छी कोशिश थी। पर एक थोड़ा सा सजेशन ही मैं देना चाहूंगा बच्चों को कि अपने आप को शो ऑफ तो उन्होंने किया, पर शो ऑफ के साथ में वॉक भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना शो ऑफ इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी तक जिन बच्चों का मैंने परफॉर्म देखा है, उन बच्चों में शो ऑफ ही बहुत ज्यादा था, वॉक मतलब ना के बराबर ही था। तो जजमेंट में थोड़ा सा परेशानियां हुई हमें, पर कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम था बच्चों का, तो बच्चों के लिए सबको ऑल द बेस्ट। सभी विनर है मेरे नजरों में तो। पर एक चीज मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, जैसे सचिन सर ने काफी अच्छी चीजें कही और बेस्ट कहा, तो बस बच्चों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो कुछ मूल मंत्र होते हैं, जैसे हेल्दी माइंड, हेल्दी थॉट, विल पावर, वर्क एफिशिएंसी, अगर आपके अंदर है, माइंड के अंदर है, वो चीजें है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई मुकाम कठिनाई भरा हो या उसको आसानी से हासिल किया जा सकता है सर। जी जी, बहुत सही बात कही सर आपने भी। और ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों की ये कोशिश है,
और इस कोशिश में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। उससे मतलब कहते हैं ना, एक संकेत है कि वो अगर इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे उनका उज्जवल भविष्य होगा ही सही। और बिल्कुल सर। आज उन्होंने अपना एक इंटरेस्ट दिखाया है, एक उनका जज्बा दिखाया है, वो बहुत अच्छी बात है। और हम अपने अपने जीवन में अगर अपना अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना 100% देना बहुत जरूरी है, कि देना एक्चुअल बहुत उसमें जरूरी। इन्वॉल्वमेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। और बच्चे आजकल, ये बात सही है, लेकिन आज सर है ना, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल गई है। मतलब आज अगर हम ये कल्पना करें कि ये जो फैशन इंडस्ट्री है और जो है उसको अगर हम आज से 10 साल या 15 साल पहले की इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि बहुत चेंजेस हुआ है इसमें। आज काफी बच्चों चेंजेस को, हुआ। जी, पहले तो ये कहता था, माँ बाप भी बच्चों को जाने से रोक देते थे कि अरे कहाँ तुम मॉडलिंग में जाओगे या क्या करोगे। और मतलब जो माइंडसेट था सोसाइटी में भी, वो भी मतलब एक जी जी तरीके सर। से इन 20 एक सालों में काफी चेंज हुआ है। और काफी बच्चों चेंज को हुआ। अपॉर्चुनिटीज, जी जी, अपॉर्चुनिटी। और मैं समझता हूँ आप हुए, सचिन सर हुए, आप लोगों ने जो स्ट्रगल किया होगा इस लाइन में आने के लिए, और आपने किन किन चीजों का, हालात का सामना किया होगा, तो उसको कंपेयर करें तो आज बच्चों को उस कंपैरिजन में काफी सुविधाएं जो हैं और काफी काफी सुविधाएं। अपॉर्चुनिटीज हैं और वो मिल रही है सर। वरना जैसे मिल इंदौर रही। या आसपास के क्षेत्र में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या कोई अच्छा कोरियोग्राफर आज से 30 साल पहले, या उस तरीके से उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था इस उसमें। नहीं था। अब धीरे धीरे बिल्कुल सही है। अब धीरे धीरे आया अब धीरे धीरे आया है, तो बच्चों को इसका फायदा उठाना ही चाहिए। और ये सुविधाएं बिल्कुल जो सर, मिल रही श्योर। हैं आज, ये इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, अमृति है और आगे अपना अगला जो इवेंट है विनिर्मा, और ये तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आजकल बच्चों को सहज रूप से मिल रहा है, तो सहज रूप से इसका मिल ये रहा है। फायदा उठाएं। जी जी, तो उठाएं तो बहुत जी इनके सर। लिए भी अच्छा रहेगा सर। जी सर, और बिल्कुल बिल्कुल और ये श्योर। मॉडलिंग की दुनिया, और ये दुनिया तो अपने आप की एक बहुत ही ग्लैमरस दुनिया होती है सर। ग्लैमरस। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इसमें कई डायनामिक स्टूडेंट्स भी है, अपने ग्लैमरस। बोलना चाहूंगा सर, एक्चुअली वैष्णव कॉलेज से ही अपने, मैं कई सालों से जुड़ा हूँ वैष्णव कॉलेज सर। वैष्णव कॉलेज से जी कई जी, ऐसे मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं और फैशन फील्ड के अंदर है, जो बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा खासा नाम है उनका। और जी जी, अमृति और विनिर्मा के जो फैशन शोज है, उनमें से ही, उन पार्टिसिपेंट्स में से ही कुछ पार्टिसिपेंट जैसे जो आज की डेट में मतलब वो ग्लैमर फील्ड में, फैशन फील्ड में मतलब अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंदौर को, एमपी को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है फैशन फील्ड के अंदर। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने सर। और ये जो आपने अभी जो अपना वक्तव्य दिया है, जो सेंटेंस बोला है सर, ये इस जी जनरेशन सर। को भी मोटिवेट करेगा, कि उनको भी मोटिवेट लगेगा कि करेगा। ये जो अमृति और विनिर्मा और ये जो इस प्रकार के प्लेटफॉर्म है, उससे हम एक नए चैनल की ओर, प्लेटफॉर्म एक से नए रास्ते की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अग्रसर होते हैं आपने सर। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा संदेश भी दिया इन बच्चों को, कि और आने वाले जो जूनियर्स हैं जो हैं, उनको भी लगेगा कि नहीं यार, हम इसको और अच्छे तरीके से करें, इसमें और अच्छा परफॉर्म करें, तो हो सकता है कि ये विधा या और ये जो लाइन है, इसमें भी बोले हम आगे अपना अपना करियर बना सकते हैं और बढ़ सकते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल श्योर। और एक चीज और है सर, सचिन सर भी और क्रांति सर, आप भी मेरी बात से एग्री होंगे कि इसमें जी। कोई बच्चा समझे कि नहीं, हम ये इसमें भाग ले रहे हैं तो हमको क्या सिर्फ मॉडलिंग में जाना है, या सिर्फ हमको फैशन वही करना, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा अगर नहीं है। अपन इसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके अंदर जो स्किल डेवलप होगी, किस टाइप की स्किल डेवलप होगी, डिस्प्ले की, कॉन्फिडेंस की, पब्लिक स्पीकिंग की, पब्लिक के सामने जाने की, एक कॉन्फिडेंस जो बिल्कुल लेवल सर। आता है, वो आपको कॉर्पोरेट में अगर आप सीईओ बन रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हो या जीएम बन रहे हो, तो वहां पर आपको ये स्किल काम आएगी, किस तरीके काम से आएगी, अपने आप श्योर अपनी सर। पर्सनालिटी को एग्जिबिट करना है, अपनी पर्सनालिटी को शो करना है। और पर्सनालिटी सिर्फ फिजिकल भी नहीं, मेंटली भी, और एक्सप्रेशन वाइज भी, ये सब चीजें भी इसमें मैटर करती हैं। राइट, क्या है कि जी कई सर, मॉडल श्योर। आप लोग भी जानते होंगे कि उनकी फिजिक्स तो बहुत अच्छी है, बल्ले बल्ले बॉडी खूब बना लिया, लेकिन चेहरे पे भाव नहीं ला पा रहे हैं, बिल्कुल भाव नहीं सही ला सर, पा रहे हैं बिल्कुल वो, सही। उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिख पा रहा है, आंखें इधर उधर ब्लर मतलब हो रही है, ब्लिंक कर रही है, घबरा रही है, तो नहीं, आंखें भी अपने को बिल्कुल, आंखों कहते हैं ना, आंखें भी बोलती हैं, तो वो हाई भी फैशन बिल्कुल कॉन्फिडेंस। सर। में इस, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ध्यान रखना है। तो ये एक तरीके से इनर और आउटर, मतलब जो दोनों पर्सनैलिटीज को डेवलप करने का एक अच्छा माध्यम है ये। जी सर, श्योर, सही है। आई थिंक जोशी सर, अब हमको अनाउंसमेंट की तरफ जाना चाहिए। आई हाँ, रिक्वेस्ट टू ऑल अगर द तैयारी जजेस। हो गई हो तो, हाँ, दे हैव, बिल्कुल सर। अगर शीट दे आर रेडी। तैयार हो गई हो तो मैं चाहूंगा कि एक स्क्रीन जो है जजेस की, आप टेक्निकल टीम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
तो हमारे जो लेजेंड्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर हैं। I request all the judges to announce the winners. Of course, sir. वैसे तो हर पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, सभी ने बहुत अच्छा वॉक किया है, सभी ने का ड्रेसअप बहुत अच्छा था, बट स्टिल वी हैव टू चूज ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अमंग ऑल दिस पार्टिसिपेंट्स। जिनका प्राइज नहीं आया है, जो विनर नहीं है, वो ये मत सोचिए कि उन्होंने कहीं परफॉर्मेंस उनका खराब है। हर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड अपने अपने एरिया में उन्होंने बहुत अपना बेस्ट दिया है। हमें 2 परफॉर्मेंस को चूज करना था, वन मिस अमृति एंड अदर इज मिस्टर अमृति। सो मिस अमृति इज, कौन होगा मिस अमृति? कुशाग्र चौहान। एंड मिस्टर अमृति इज लक्ष्य जागरी। I think these students are here or not? Jagri. Lakshya Jagri and Kushagra Chauhan. They are here. ये SVV सही है मैडम जी? Yes, Kushagra Chauhan is from SVV and Lakshya Jagri, I think he is also from SVV. जी, तो अभी ये है कुशाग्र है इस पे, ये प्रमोट कर दीजिए इसमें। मैंने इनको प्रमोट कर दिया है एज ए पैनलिस्ट, कुशाग्र चौहान को आप बोल सकते हैं। कुशाग्र एंड लक्ष्य। कुशाग्र और लक्ष्य, आप अपना जो कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करिए बेटा। चलो, थैंक यू योगिता मैडम। हेलो। यस यस लक्ष्य, यू कैन स्पीक। लक्ष्य आप ज्वाइन हो गए हैं? लक्ष्य भी ज्वाइन हो गए। कुशाग्र इज आल्सो देयर। आप यस। चलो, कांग्रेचुलेशंस कुशाग्र। आप जजेस को से कुछ बात कहना चाहेंगे? यस सर। थैंक यू सो मच जजेस, आई एम वेरी हैप्पी। Congratulations कुशाग्र। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Congratulations Lakshya and Kushagra. लक्ष्य आप। Thank you judges, thank you ma'am, and thank you to the all Ambriti. Congratulations Lakshya, congratulations Lakshya. Thank you sir. Many congratulations to both of you. बहुत congratulations. Thank you sir, thank you ma'am. आप दोनों को बहुत मुबारकबाद हो, ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जजेस ने अभी जो बातें कही हैं, आप उसको भी नोट कीजिए और अपना उस तरीके से और बेहतर से बेहतर परफॉर्म। आप लोग सभी ये लोग सोचिए, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। यस मैडम ने बहुत सही बात कही है। बहुत करते रह रहे अभी, आप जैसा आपको बताया गया है अभी पैनलिस्ट में कि अभी विनर में हो रहा है, तो ऑल ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट फंक्शन आल्सो। मैम मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि लास्ट ईयर विनरमा मैंने पूरा देखा था। और वहीं भी सर ने एक बात बोली थी कि वॉक और पोजेस जो सर ने बोला था उस टाइम भी बोला था, उसी बात को मैं कुशाग्र दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, उसी बात को मैंने फॉलो करके आज इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था। एंड शायद वही सर की बात इंस्पायर थी जिससे आज हम जीते हैं। बहुत अच्छी बात है। और लक्ष्य ये आपने जो बात कही है, ये सभी आपके साथी और आपके जूनियर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा बात है कि आपको अगर जजेस ने कोई बात कही है, अगर आप उसको नोट करके उस जो भी आपको फीडबैक मिलता है इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। तो ऑलवेज आप थैंक यू मैम। ओके बेटा। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि जजमेंट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स, मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान में रखकर वीडियो बनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब हम कोई भी जैसे वर्चुअल फैशन शोज में पार्टिसिपेंट्स करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो कैमरा है वो स्टिल होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और जहां से सामने से वॉक करते हुए हमें आना है,
फिर वहां पर पोजेस देना होते हैं, 2 से 3 4 पोजेस देना होते हैं, अपने आप को शो ऑफ ही करना होता है। फिर बैक टर्न लेकर मिड में हमें कुछ पोजेस वगैरह देना होते हैं, एंड फिर एन एग्जिट, एंड फिर नमस्ते वगैरह या अपना नाम लेकर आप एग्जिट कर सकते हैं। बस आप ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। A very heartiest congratulations to Miss Ambriti and Mr. Ambriti 2022. You will be receiving gift hampers from Pidilite, free food coupons from Campus South, and free e-vouchers from Reflection Salon. Now I request Professor Manisha Piparia to propose vote of thanks. Thank you so much, Saurabh, for giving me this opportunity. Thank you, all of you. On behalf of Shri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya, first of all, I express my deep gratitude to our eminent experts, Mr. Kriti Soni sir, Mrs. Yogita Agrawal ma'am, and Sachin Karma sir for being with us. Thank you so much, all of you. We would like to extend our gratitude to Honorable Vice Chancellor Upendra Dhar sir, Shri Vaishnav Vidyapith Vishwavidyalaya, Honorable Architect Vishal Yadi sir, Coordinator of Spandan-2022. And I am also thankful very much to Engineer Pawan Kumar Gupta sir and Engineer Ajay Shankar Joshi sir for coordination and co-coordination with Ambriti 2022 for continuous support and advice, which have greatly helped us towards the successful organization of our session. My sincere thanks to wonderful participants, because without them, this is nothing that is possible. And all the best to all the participants for your future. It is not, it's just the start. Don't lose. You all did the best. I would really like to thank all the judges for coming and gracing our event with your presence, and at last to all the student volunteers who worked hard to make the event successful. Last but not the least, I would like to thank our whole team of Spandan 2022 who have been running around a lot of things for grand success of the event, still start until the end. Thank you so much. Thank you so much for all of you for being with us. Thank you so much, everyone, for joining us. Have a good day. Good day. Thank you everyone present Thank here. you so much. Vishal Thank you judges, thank you so much. Thank you sir. थैंक यू पवन सर, आपने बहुत हार्ड वर्क किया इस बार एज ए कोऑर्डिनेटर। नहीं सर, मनीषा मैडम का जोशी सर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। Yes, congratulations to whole team, पूरी टीम ने मेहनत की है। जोशी सर तो खैर हैं ही टेक्सटाइल के भीष्म पितामह और ये फैशन शो के भीष्म पितामह बोलता हूँ मैं उनको, तो उनका गाइडेंस तो रहता ही है हमेशा, लेकिन आप लोगों ने इस बार बहुत स्मूथली इसको कंडक्ट किया। एंड ये आईडी सर का गाइडेंस था, आप लोगों की मेहनत थी, और अदिति मैम ने भी अपने वॉलंटियर्स के साथ स्पॉन्सर्स लाने में और पब्लिसिटी में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है इस बार। सो बहुत ही स्मूथ और सक्सेसफुल रहा। हाउएवर आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन जब प्रोग्राम्स करते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफलाइन के लिए डिजाइंड हैं, लेकिन उन डिफिकल्टीज के बाद भी बच्चों ने भी और आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत की। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इस बार का अमृति बहुत ही सक्सेसफुल और स्मूथ रहा है। It won't be possible without your presence. You are working so hard for that. नहीं, और जजेस का भी हमें ऑनलाइन ब्लेसिंग्स मिली हैं पार्टिसिपेंट्स को, उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले स्पंदन में और अमृति में हम लोग ऑफलाइन मोड में वापस आएंगे नेक्स्ट ईयर जो भी होगा। बिल्कुल, श्योर। धन्यवाद। Thank you so much, all of you. Thank you. Thank you Sachin sir. Thank you Kranti sir. Thank you sir. Thank you Yogita madam. Thank you ma'am. Thank you everyone. Thank you the encouraging committee, judges. Thank you all the participants. And thank you technical team for such a good flow of the event. Thank you. Thank you.